Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बच्चों, important questions of chapter number 20, ठीक है, chromosomes and DNA, इसके important questions के साथ मैं हाजिर हूँ. Most important questions, short questions note करें. How many chromosomes are present in mouse and sugarcane? Number 2, what is central dogma? Central dogma में transcription and translation दोनों आते हैं. What is central dogma? Give its 2 steps. Number 3, what is contribution of Erwin Chargaff with respect to chemical nature of DNA? Number 4, what is meant by karyotype of a cell? Question 5, briefly describe replication of lagging strand of DNA. Question 6, differentiate between heterochromatin and euchromatin. Then है जी, what is a role of promoter in transcription? Question number 8, what is universality of genetic code? Question 9, how is newly synthesized messenger RNA protect its transcription? Question 10, give the functions of DNA polymerase 3. Question 11, what is point mutation? Give its 2 examples. Next है जी, question 12, define initiation codon. What does it code for? Define transcription. What are nucleotides? Draw structural formula of purines. Describe briefly sickle cell anemia. Question 17, what is translation? Question 18, what is transformation or transforming principle? Compare telocentric and acrocentric chromosomes and what? Acrocentric chromosomes. Mention the types of chromosomes due to centromeric position, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के हवाले से आपको क्रोमोसोम्स की टाइप्स जो हैं वो बतानी है. क्वेश्चन 21, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन बबल, हाउ इज इट फॉर्म्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस इन ट्रांसक्रिप्शन. क्वेश्चन 23, व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, how it is formed. Question 24, differentiate between conservative and dispersive replication methods. ठीक है, replication of DNA, conservative and dispersive models of DNA replication. Question 25, define sense and anti-sense strands, that is lagging and leading strands. वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सेकंड टाइम मैं बोल रहा हूं. देन डिफाइन फिनाइल कीटोन्यूरिया. डिफाइन फिनाइल कीटोन्यूरिया. क्वेश्चन 27, एनलिस्ट नॉनसेंस कोडॉन्स एंड देयर फंक्शन. क्वेश्चन 28, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, आल्सो गिव देयर लेंथ. क्वेश्चन 29, डिफाइन जेनेटिक कोड. देन गिव chromosomal theory of inheritance. Question 31, give the chemical composition of RNA. Question 32, differentiate between pyrimidines and purines. Question 33, differentiate between codon and anticodon. Question 34, give structural formulae of adenine and thymine. Question 35, differentiate between transcription and replication. Question 36, how is translation terminated? Question 37, define semi-conservative replication and conservative replication. Next, define chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations. Sketch to show phosphodiester bond. Question 40, differentiate between template and coding strands of DNA. Question 41, what is nucleosome?
42 enlist initiation codon and nonsense codons, ये कोड्स लिखने हैं आपको. Define mutation, differentiate between transcription and translation, draw structural formula of cytosine, define euchromatin, name types of RNA. Next, what is transfer RNA, give its role. Next, differentiate between chromosome and nucleosome. ठीक है, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोसोम. इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. हाउ डिड हर्शे एंड चेज डेमोन्स्ट्रेट दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल. क्वेश्चन 2 है जी, एक्सप्लेन वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस. क्वेश्चन 3, हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए भी डायग्राम से पूछ ली जा सकती. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ड्रॉ द मॉडल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल. वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग. हाउ मॉर्गन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द थियरी ऑफ हेरिडिटी. द थियरी ऑफ हेरिडिटी. नेक्स्ट है जी, राइट अ नोट ऑन म्यूटेशन. What is karyotype and write down types of chromosomes with respect to centromeric position diagrammatically. Question 9 is, describe the function of DNA polymerase 3 in the process of replication. Next, elaborate chromosomal theory of heredity. Next, how did Michelson and Stahl prove that DNA replication is semi-conservative? Very important. Michelson and Stahl का जो प्रूफ था, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज करेक्ट. क्वेश्चन 12 इज, हाउ वुड यू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट्स बाय सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. ये सेम है, Michelson and Stahl वाला ही एक्सपेरिमेंट. डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम. क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्वेश्चन 15, व्हाट इज जेनेटिक कोड. Describe its characteristics. Question 16, how the cells use RNA to make protein. Next, describe Griffith's experiment to prove DNA as hereditary material. Next, describe different types of RNA with their roles. Explain Michelson and Stahl experiment. Next, sketch DNA replication फॉर्क एंड लेबल. देखा, स्केचिंग आ गई, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क और उसको लेबल करना है. नेक्स्ट, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड व्हाट डू यू नो अबाउट देयर टाइप्स. एक्सप्लेन वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. एंड लास्ट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अलोंग द ट्रांसफर आरएनए. यानी कि आपने ट्रांसलेशन का सारा प्रोसेस जो है वो सेकंड लास्ट टॉपिक को सारा बयान करना है. इसी के साथ ही बेटा इजाज़त दीजिए. अगले चैप्टर के बाद अगले चैप्टर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने हाजिर होऊंगा. शुक्रिया.